ये है हार्मोन वाला चैप्टर। तो इसमें इसका नोट्स पहले देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले है कि हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट है जो बहुत ही कम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 0.5 ग्राम होता है। 6 टाइप के ट्रॉपिक सेल्स होते हैं: सोमैटिक सेल्स, थायरोट्रॉपिक सेल्स, कॉर्टिकोट्रॉपिक सेल्स, गोनेडोट्रॉपिक सेल्स, लैक्टोट्रॉपिक सेल्स और पार्फ इंटरमीडिया जो कि एमएफएच रिलीज करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है 70% ऑफ द टोटल सिक्रेशन को रिलीज करता है। न्यूरोहाइपोफिसिस 25% ऑफ टोटल सिक्रेशन को रिलीज करता है। मोस्टली हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मेल में एलएच लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, और एफएसएच जो है वो फर्टोली सेल्स इनहिबिन प्लस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एफएमएफ को रिलीज करता है। फीमेल में एलएच है जो ओवुलेशन कराएगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिकल, फॉर्म एंड मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटेम को, फिर कॉर्पस ल्यूटेम रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन को। एफएसएच है जो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इन द ओवरी करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन है जो रिलीज करवाता है। पीआरएल को मेमोट्रॉफिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। पीआरएल का लेवल बढ़ने से जीएनआरएच का सिक्रेशन है जो इनहिबिट होता है, तो एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन भी स्टॉप होगा, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, यानी दैट इन द 6 मंथ्स ऑफ द लैक्टेशन ये होता है। फिर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लाई एडीएच, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लाई से एडीएच वेसोप्रेस निकलेगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द डिफ्यूटी और कलेक्टिंग डक्ट करेगा। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑक्सीटोसिन निकलेगा जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है और बर्थ हार्मोन भी इसको कहते हैं। डोपामाइन एक्साइटेटरी का काम करता है, पर कई जगह बॉडी में इन्विट्री का काम भी करता है। जीएच और एफटीएच जो है ये नेगेटिव, जीएच और एफटीएच का नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन है। एफटीएच, टीएफएच और एलएचएफएच का है जो फीडबैक इनहिबिशन से होता है नेगेटिव रेगुलेशन, और पीआरएल का है जो डोपामिन होता है। थायराइड का इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू है। पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स जिसे कहते हैं, थायरिक एसिड और एंटीसिटी है, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करेगा, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है ये। फिर आता है थायरोग्लोबुलिन, स्टोर का हाउस ऑफ द T3 एंड द T4 होता है। थायरोक्सिन जो होता है ऑर्डिनेटरी फॉर्म ऑफ द थायरोसिन अमीनो एसिड है, लीवर में T4 से T3 में कन्वर्ट होगा। T4 में 80% होता है और T3 में होता है 20% होता है। T3 मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन का रोल है कि रेगुलेशन ऑफ द बीएमआई करेगा, सपोर्ट प्रोसेस of the red blood cell formation, control metabolism of the carbohydrate, fat and the protein, maintenance of the water and the electrolyte balance करेगा, development and the maturation of the central neural system है जो कहता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड में सिंपल ग्वाइटर होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और कैटेनिज्म हो जाता है। फिर हाइपरसिक्रेशन ऑफ थायराइड में एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर होगा, ग्रेव डिजीज जिसे कहते हैं, प्रोट्रूडेड आईबॉल होगा और बॉडी वेट कम होगा, बॉडी टेम्परेचर है जो ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल ग्वाइटर ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड में होता है। एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर जो होता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द थायराइड, यानी कि ड्यू टू द कैंसर होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है पैराथार्मोन पीटीएच को रिलीज करता है, जाकर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है ये। डीएल्यूफन या डीमिनराइजेशन है जो कहता है। इसके बाद फिर आता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन करके, और जेजी सेल्स ऑफ द किडनी को स्टिमुलेट करके जो कैल्सिट्रॉल हार्मोन रिलीज करेगा। कैल्सिट्रॉल गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है जो बढ़ा देता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच है जो टिटनी करता है, और हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच जो है ऑस्टियोपोरोसिस करेगा। पिनियल ग्लैंड डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन पर होता है। फंक्शन ऑफ द मेलाटोनिन है 24 आवर डायनल रिदम या स्लीप बैक साइकिल। बॉडी टेम्परेचर और इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को। HIV थाइमस ग्लैंड को अपना टारगेट बनाता है। थाइमोसिन में CMI T लिम्फोसाइट है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है B लिम्फोसाइट होता है, दोनों को स्टिमुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैच्योरेशन ऑफ द गैमेट्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड्रोजन एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है जो दिखाता है। इसके बाद फिर है कि एस्ट्रोजन का मेन सोर्स फॉलिकल सेल्स होता है। एडिनल मेडुला कैटाकोलामाइन रिलीज करता है, जिन्हें एडिनलिन या एपिनेफ्रिन 80% होगा, और नॉर एडिनिल नॉर एपिनेफ्रिन 20% होता है। एडिनिल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होता है, GFR जोना फैसिकुलेटा, बायोफ्ट लेयर है F वाला, बीच वाला जो कि है। फिर जोना ग्लोमेरुलस जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है। मेन हार्मोन इसका एल्डोस्टेरोन है, और राफ इसका सिक्रेशन कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, तो एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम प्लस वाटर फ्रॉम द डिफ्यूटी इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट एंड द पोटेशियम डिक्रीज करेगा, वाटर एंड आयनिक बैलेंस करेगा, और ऑस्मोलिटी और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिसोल हाइड्रोक्सीकॉर्टिसोन मेन हार्मोन है, एफटीएच सिक्रेटिन कंट्रोल करता है। फिर फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल है कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के समय है जो बढ़ जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, प्रोटीन और ग्लाइकोजन करता है, करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा।
एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन है जो स्टिमुलेट करता है। कॉर्टिसोल है जो इम्यूनोसप्रेसर है। जोना रेटिकुलरिस है जो एंड्रोजन डीएचई और एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल को रिलीज करता है। हाइपरसिक्रेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड में एडिफन डिजीज होता है जिसमें ग्लूको प्लस मिनरल्स होता है, और हाइपरसिक्रेशन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड कोर्टी से कुंस डिजीज होता है। हाइपरसिक्रेशन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हो गया तो कुंस डिजीज, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हो जाएगा तो कफिंग डिजीज हो जाता है। अब इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी कहता है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट rapid coordination among the organs. The neural coordination is fast but short-lived, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body, and the cellular function need to continuously regulated. A special kind of the coordination and integration has to be provided. This function is carried out by the hormone. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function in the body. फिर आता है endocrine glands and the hormone. तो endocrine gland lack ducts and hence called a ductless gland. Their secretion are called the hormone. The classical definition of the hormone as a chemical produced by the endocrine glands are released into the blood and transported to a distantly located target organ. Her current scientific definition is follows. Hormones are the non-nutrient chemicals which act as the intercellular messenger and are produced in the trace amount. The new definition covers a number of the new molecules in addition to the hormones secreted by the organoid endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of the chemicals such as act as a hormone and provide coordination in the vertebrates. The human endocrine gland is described here. फिर आता है ह्यूमन endocrine system. The endocrine glands and the hormone producing diffuse cells located in the different parts of our body constitute the endocrine system. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, and the gonads, testes in the male and ovary in the female are the organoid endocrine gland body in our body. In addition to these, some other organs, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart, also produce hormones. A brief account of the structure and the function of all the major endocrine glands and the hypothalamus of the human body is given in the following section. अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है फोकसन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, इधर पिनियल डोर्सल में है, फिर थायराइड एंड पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पैनक्रियाज, एडिनल दिए हुए, फिर टेस्टिस इन द मेल और ओवरी इन द फीमेल दिखाए हुए। अब इसके बाद फिर आता है द हाइपोथैलेमस। तो कहता है द एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन प्रो ब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड spectrum of the body function. It contains several group of the neurosecretory cells called nuclei which produces hormone. These hormones regulate the synthesis and the secretion of the pituitary hormones. However, the hormones produced by the hypothalamus are of two types: the releasing hormone which stimulates secretion of the pituitary hormone, and the inhibiting hormone which inhibits the secretion of the pituitary hormone. For example, a hypothalamic hormone called the gonadotropin releasing hormone GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of the gonadotropins. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of the growth hormone from the pituitary. These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axons and are released from the nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary. The posterior pituitary under the direct neural regulation of the hypothalamus. अब इसके बाद बात करते हैं द पिट्यूटरी की। तो इसमें कहता है कि द पिट्यूटरी gland is located in the body cavity called the fila turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk. It is divided anatomically into adenohypophysis and the neurohypophysis. Adenohypophysis consists of the two portions, pars distalis and the pars intermedia. The pars distalis region of the pituitary, commonly called the anterior pituitary, produces growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone TSH, and the adenocorticotrophic hormone FTH, luteinizing hormone LH, and the follicle stimulating hormone FSH. Pars intermedia secretes only one hormone called the melanocyte stimulating hormone MSH. However, in the humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis. Neurohypophysis, pars nervosa, also known as the posterior pituitary, stores and releases two hormones called oxytocin and the vasopressin, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis. यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी दिखाया हुआ है। ये है जो इससे आ रहा है यहाँ पर। अब इसमें आता है कि ओवर सिक्रेशन of the GH stimulates the abnormal growth of the body leading to the gynecomastia, and the low secretion of the GH results in the stunted growth resulting in the pituitary dwarfism. Excess secretion of the growth hormone in the adults, especially in the middle age, can result in a severe disfigurement, especially of the face called acromegaly, which may lead to a serious complication and a premature death if unchecked. The DH is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in the external feature become noticeable.
Prolactin regulates the growth of the mammary gland and the formation of the milk in them. The TSH stimulates the synthesis and the secretion of the thyroid hormone from the thyroid gland. FTH stimulates the synthesis and the secretion of the steroid hormone called the glucocorticoids from the adrenal cortex. LH and the FSH stimulate gonadal activity and hence are called as gonadotropin. In males, LH stimulates the synthesis and the secretion of the hormone called androgens from the testes. In males, FSH and androgens regulate the spermatogenesis. In the female, LH induces ovulation of the fully mature follicle, Graafian follicle, and maintains the corpus luteum, formed from the remnants of the Graafian follicles as ovulation. FSH stimulates growth and the development of the ovarian follicle in the female. MSH acts on the melanocyte melanin containing cells and regulates the pigmentation of the skin. Oxytocin acts on the smooth muscle of our body and stimulates their contraction. In the female, it stimulates vigorous contraction of the uterus at the time of the childbirth and milk ejection from the mammary gland. Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates the reabsorption of the water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces the loss of the water through the urine diuresis. Hence, it is also called as the antidiuretic hormone ADH. An impairment affecting the synthesis of the release of the ADH results in the diminished ability of the kidney to conserve the water, leading to the water loss and the dehydration. This condition is known as the diabetes insipidus. अब यहाँ पर दिए हुए vasopressin वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों है और थिन है, कनेक्टिव टिश्यू इस्थमस से कनेक्टेड है, वोकल कॉर्ड, थायराइड, ट्रैकिया दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द थायराइड एंड द पैराथायराइड, वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड का दिखाया हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं द पिनियल ग्लैंड की। द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पिनियल सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. Melatonin plays a very important role in the regulation of the 24-hour diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining a normal rhythm of the sleep-wake cycle, body temperature. In addition, melatonin also influences metabolism, pigmentation, and the menstrual cycle as well as our defense capability. फिर आता है थायराइड ग्लैंड. The thyroid gland is composed of the two lobes which are located on the either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of the connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of the follicles and the stromal tissue. Each thyroid follicle is composed of the follicular cells enclosing a cavity. These follicular cells synthesize two hormones, tetraiodothyronine or the thyroxine T4 and the triiodothyronine T3. Iodine is essential for the normal rate of the hormone synthesis in the thyroid. Deficiency of the iodine in our diet results in the hypothyroidism and the enlargement of the thyroid gland, commonly called as the goiter. Hypothyroidism during the pregnancy causes the defective development and maturation of the growing baby, leading to the stunted growth, cretinism, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin drift, mutism, etc. In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular due to the cancer of the thyroid gland or due to development of the nodules of the thyroid gland. The rate of the synthesis and the secretion of the thyroid hormone is increased to the abnormal high levels, leading to the condition called the hypothyroidism, which adversely affects the body physiology. Ophthalmic goiter is a form of the hypothyroidism characterized by the enlargement of the thyroid gland, protrusion of the eyeball, increased basal metabolic rate, and the weight loss, also called as the Graves' disease. Thyroid hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate. These hormones also support the process of the red blood cells formation. Thyroid hormones control the metabolism of the carbohydrate, proteins, and the fats. Maintenance of the water and the electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormones. Thyroid gland also secrete a protein called the thyrocalcitonin TCT, which regulate the blood calcium level. अब इसके बाद फिर बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की. तो इन द ह्यूमन्स 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair each in the two lobes of the thyroid gland. The parathyroid glands secrete a peptide hormone called the parathyroid hormone. The secretion of the PTH is regulated by the regulating levels of the calcium ions. Parathyroid hormone PTH increases the calcium levels in the blood. PTH acts on the bones and stimulates the process of the bone reabsorption, dissolution, demineralization. PTH also stimulates reabsorption of the calcium by the renal tubules and increases the calcium absorption from the digested food. It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone. That means it increases the blood calcium level. Along with the TCT, it plays a significant role in the calcium balance in the body. अब उसके आगे है थाइमस. तो थाइमस इज ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स behind the sternum on the ventral side of the aorta. The thymus play a major role in the development of the immune system. This gland secretes the peptide hormone called the thymosin. Thymosin play a major role in the differentiation of the T lymphocyte, which provide the cell-mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of the antibody to provide the humoral immunity. Thymus is degenerated in the old individual, resulting in the decreased production of the thymosin. As a result, the immune response of the old person become weak.
नेक्स्ट है एडिनल ग्लैंड। तो आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ द एडिनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द टिश्यू, द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एडिनल मेडुला and outside the fly the adrenal cortex. Under protection of the hormones by the adrenal cortex alters the carbohydrate metabolism, causing acute weakness and the fatigue, leading to a disease called the Addison disease. एडिसन का मतलब होता है ग्लूको प्लस मिनरलो और एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर। एडिसन डिजीज ग्लूको प्लस मिनरलो कॉर्टिकॉइड के अंडर प्रोटेक्शन से होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है एडिनल ग्लैंड, किडनी और एडिनल कॉर्टेक्स हो गया बाहर में, और अंदर में एडिनल मेडुला हो गया। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडिनल ग्लैंड एबव किडनी सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ द एडिनल ग्लैंड दिए हुए। फिर आता है कि द एडिनल मेडुला secretes two hormones called adrenaline or the epinephrine and the noradrenaline or norepinephrine. These are commonly called as the catecholamines. Adrenaline and the noradrenaline are rapidly secreted in response to the stress of any kind and during the emergency situation and are called as the emergency hormones or the hormones of the flight or the fight. These hormones increase the alertness, pupillary dilation, piloerection, raising of the hair, fitting, etc. Both the hormones increase the heartbeat, the strength of the heart contraction, and the rate of the respiration. Catecholamines also stimulate the breakdown of the glycogen, resulting in the increased concentration of the glucose in the blood. In addition, they also stimulate the breakdown of the lipid and the protein. The adrenal cortex can be divided into three layers called the zona reticularis inner layer, zona fasciculata middle layer, and the zona glomerulosa outer layer. The adrenal cortex secretes many hormones commonly called as the corticoids. The corticoids which are involved in the carbohydrate metabolism are called as the glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Corticoid which regulate the balance of our body and the electrolytes in our body are called as the mineralocorticoid. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. Glucocorticoid stimulates the gluconeogenesis, lipolysis, and the proteolysis and inhibit the further uptake and utilization of the amino acid. Cortisol is also involved in the maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. Glucocorticoids, particularly cortisol, produce the anti-inflammatory reaction and suppress the immune response. Cortisol stimulates the RBC production. Aldosterone acts mainly at the renal tubule and stimulates the reabsorption of the sodium and the water and the excretion of the potassium and the phosphate ion. Thus, the aldosterone helps in the maintenance of the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure, and the blood pressure. A small amount of the endogenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of the axial hair, pubic hair, and the facial hair during the puberty. अब इसके नेक्स्ट बाद आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ द islets of the Langerhans. There are about 1 to 2 million islets of the Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. The two main types of the cells in the islets of Langerhans are the alpha cells and the beta cells. The alpha cells secrete a hormone called the glucagon, while the beta cells secrete the insulin. Glucagon is a peptide hormone and play an important role in the maintaining the normal blood glucose level. Glucagon acts mainly on the liver cell hepatocytes and stimulates the glycogenolysis, resulting in an increased blood sugar, hyperglycemia. In addition, this hormone stimulates the process of the gluconeogenesis, which also contributes to the hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. This glucagon is a hyperglycemic hormone. फिर उसके बाद आता है कि इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस. इंसुलिन एक्ट्स mainly on the hepatocytes and the adipocytes cells of the adipose tissue and enhances cellular glucose uptake and the utilization. As a result, there is rapid movement of the glucose from the blood to the hepatocytes and the adipocytes, resulting in a decreased blood glucose level, hypoglycemia. Insulin also stimulates conversion of the glucose to the glycogenesis in the target cell. The glucose homeostasis in the blood is maintained jointly by the two insulin and the glucagons. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called the diabetes mellitus, which is associated with the loss of the glucose through the urine and the formation of the harmful compounds known as the ketone body. Diabetic patients are successfully treated with the insulin therapy. अब नेक्स्ट पे आता है टेस्टिस. तो इसमें आता है कि पेयर ऑफ द टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक्स आउटसाइड ऑफ डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल. टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. Testis is composed of the seminiferous tubule and the stromal or the interstitial tissue. The Leydig cells or the interstitial cells which are present in the intertubular space produce a group of the hormones called androgens, mainly testosterone. Androgens regulate the development, maturation, and the function of the male accessory sex organ like the epidermis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra, etc. These hormones stimulate the muscular growth of the facial and the axillary hair, aggressiveness, low pitch of the voice, etc. Androgens play a major stimulatory role in the process of the spermatogenesis, formation of the spermatozoa. Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behavior libido. These hormones produce anabolic synthetic effect on the protein and the carbohydrate metabolism.
अब इसके बाद फिर आता है ओवरी। तो कहता है कि फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ द ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन which produces one ovum during the each menstrual cycle. In addition, ovary also produces two groups of the steroid hormones called estrogen and progesterone. Ovary is composed of the ovarian follicles and stromal tissue. Estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicle. After ovulation, the ruptured follicle is converted to a structure called the corpus luteum, which secretes mainly progesterone. Estrogen produces barn-ranging actions such as the stimulation of the growth and the activity of the female secondary sex organ, development of the growing ovarian follicles, appearance of the female secondary sex character, high pitch of the voice, memory gland development. Estrogen also regulates the female sexual behavior, पर libido इसको नहीं कहते हैं. Progesterone supports pregnancy. Progesterone also acts on the mammary gland and stimulates the formation of the alveoli, sac-like structure which store the milk and the milk secretion. यानी कि फिर ऑक्सीटोसिन यानी कि कॉर्टियल में फिर इजेक्शन है जो ऑक्सीटोसिन करेगा. ठीक है. मिल्क सिक्रेशन यानी कि इनिशियल में है. अब इसके बाद फिर आता है हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इसमें कहता है कि now you know about endocrine glands and their hormones. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by the some tissue which are not endocrine glands. For example, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called atrial natriuretic factor ANF, which decreases the blood pressure. When the blood pressure increases, ANF is secreted, which causes dilation of the blood vessel. This reduces the blood pressure. The juxtaglomerular cells of the kidney produce a peptide hormone called erythropoietin, which stimulates the erythropoiesis formation of the RBC. Endocrine cells present in the different parts of the gastrointestinal tract secretes the four major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin, CCK, and the gastric inhibitory peptide GIP. Gastrin acts on the gastric glands and stimulates the secretion of the hydrochloric acid and the pepsinogen. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates the secretion of the butter and the bicarbonate. CCK acts on both pancreas and the gallbladder and stimulates the secretion of the pancreatic enzymes and the bile juice, respectively. GIP inhibits the gastric secretion and the motility. Several other non-endocrine tissue secrete hormone called growth factor. These factors are essential for the normal growth of the tissue and their repairing regeneration. अब इसके आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन की. तो कहता है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर located in the target tissue only. Hormone receptor present on the cell membrane of the target cells are called the membrane bound receptor, and the receptor present inside the target cell are called the intracellular receptor, mostly nuclear receptor present in the nucleus. Binding of a hormone to its receptor leads to the formation of a hormone receptor complex. Each receptor is specific to one hormone only, and hence receptors are specific. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue metabolism, and hence physiological function are regulated by the hormone. On the basis of their chemical nature, hormones can be divided into groups: peptide, polypeptide, protein hormone जैसे इंसुलिन आ गया, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आ जाता है, स्टेरॉइड जिसमें आता है कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल एंड प्रोजेस्टेरोन, आइडोथायरोनिन जिसमें थायराइड हार्मोन आता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव जिसमें एपिनेफ्रिन आता है, मेलाटोनिन भी इसमें आ जाता है. अब इसका कहता है कि हार्मोन विच इंटैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट द सेकंड मैसेंजर, एग्जांपल साइक्लिक एमपी, IP3 कैल्शियम विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. हार्मोन्स विच इंटैक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन एक्सेट्रा मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन by the interaction of the hormone receptor complex with the genome. Cumulative bioaction result in the physiological and the developmental effects. अब यहाँ पर दिया कि जैसे हार्मोन आया FSH प्रोटीन ये सब हार्मोन तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये ओवरियन सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर इससे रिस्पॉन्स वन आएगा जिससे जनरेशन ऑफ द सेकंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक एमपी और कैल्शियम आयन होगा, और उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, मतलब यहाँ पर ओवरियन ग्रोथ होगा. और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन आता है यानी कि जो स्टेरॉयडल हार्मोन आता है तो डायरेक्ट है जो सेल के अंदर चला जाएगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर वो जीन से लगकर जीनोम से लगकर mRNA बनाएगा, फिर प्रोटीन बनेगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिससे यहाँ पर टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आएगा. एस्ट्रोजन का न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर यानी कि न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है इसका, तो न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर यानी कि इसका अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, सेल वाला नहीं. फिर है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन, प्रोटीन हार्मोन एंड द स्टेरॉयड हार्मोन. तो इसमें आता है कि देयर आर स्पेशल केमिकल विच एक्ट एज द हार्मोन एंड प्रोवाइड द केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. These hormones regulate the metabolism, growth and the development of our organs. The endocrine glands for the certain cell
The endocrine system is composed of the hypothalamus, pituitary and the pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and the gonads, testes and the ovary. In addition to these, some other organs, gastrointestinal tract, kidney, heart also produce hormone. The pituitary gland is divided into three major parts, which are called as the pars digitalis, pars intermedia, and the pars nervosa. Pars digitalis produces 6 trophic hormone. Pars intermedia secretes only one hormone, while the pars nervosa, neurohypophysis, secretes two hormones, oxytocin or ADH. The pituitary hormones regulate the growth and the development of the somatic tissue and the activity of the peripheral endocrine glands. Pineal gland secretes melatonin, which play a very important role in the regulation of the 24-hour diurnal rhythms of our body, rhythm of the sleep and the state of being awake, body temperature, etc. The thyroid gland plays an important role in the regulation of the basal metabolic rate, development and the maturation of the central neural system, erythropoiesis, metabolism of the carbohydrates, proteins and the fats, menstrual cycle. Another thyroid hormone, thyrocalcitonin, regulates calcium level in our blood by decreasing it. The parathyroid gland secretes the parathyroid hormone PTH, which increase the blood calcium level and play a major role in the calcium homeostasis. The thymus gland secretes the thymosin, which play a major role in the differentiation of the T lymphocyte, which provide the cell-mediated immunity. In addition, thymosin also increases in the production of the antibody to provide the humoral immunity. The adrenal gland is composed of the centrally located adrenal medulla and the outer adrenal cortex. The adrenal medulla secretes epinephrine and the norepinephrine. These hormones increase the alertness, pupillary dilation, pallor sweating, heartbeat, strength of the heart contraction, the rate of the respiration, glycogenolysis, lipolysis, proteolysis. The adrenal cortex secretes the glucocorticoids and the mineralocorticoids. Glucocorticoids stimulate the glucogenolysis, lipolysis, proteolysis, erythropoiesis, cardiovascular system, blood pressure, and the glomerular filtration rate, and inhibit the inflammatory reaction by suppressing the immune response. Mineralocorticoids regulate the water and the electrolyte contents of the body. The endocrine pancreas secretes the glucagon and the insulin. Glucagon stimulates the glycogenolysis and the gluconeogenesis, resulting in the hyperglycemia. Insulin stimulates the cellular glucose uptake and utilization, and the glycogenesis, resulting in the hyperglycemia, insulin deficiency, or the insulin resistance in a disease called the diabetes mellitus. The testis secretes the androgen, which affects the development, maturation, and the function of the male accessory sex organ, appearance of the male secondary sex character, spermatogenesis, male sexual behavior, anabolic pathway, and the erythropoiesis. The ovary secretes estrogen and the progesterone. Estrogen stimulates the growth and the development of the female accessory sex organ and secondary sex character. Progesterone plays a major role in the maintenance of the pregnancy as well as the mammary gland development and the lactation. The arterial wall of the heart produces arterial natriuretic factor and decreases the blood pressure. Kidney produce the erythropoietin, which stimulates the erythropoiesis. The gastrointestinal tract secretes the gastrin, secretin, cholecystokinin, and the gastric inhibitory peptide. These hormones regulate the secretion of the digestive juice and help in the digestion. तो टी लिम्फोसाइट से है जो CMI बनता है.